आज हम करेंगे डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. So what is meant by macroscopic system? Macroscopic system का क्या मतलब है? If we have a system, we will take a sample of water here. For example, we will take 100 ml of water. It is a sample of water. So it is a system. ये एक system है. So we have chosen this system for thermodynamic investigation. So the system which contains large number of chemical species like atoms, molecules or ions, that is said to be macroscopic system. That is large system. So this is a macroscopic which we have selected here. This is a macroscopic system because it contains large number of water molecules. This system, it has a large number of water molecules in it. So it is said to be a macroscopic system. So a system, macroscopic system is the one which contains large number of chemical species like atoms, molecules or ions. Thermodynamics जो एक ब्रांच है साइंस का, it does not deal with the properties of individual atoms or molecules, but deals with the matter in bulk. For example, if we take one atom, so thermodynamics has no significance. It does not deal with the properties of this atom, individual atom or individual molecule, because if अगर हम कहेंगे temperature of atom या pressure of atom or volume of atom, it has almost no significance. It has no significance. So therefore, thermodynamics does not deal with the properties of individual atoms or individual molecules or individual ions, but deals with the matter in bulk. So if we take large number of atoms, that means we will take a sample which contains large number of atoms. Then thermodynamics has significance for that because we have taken the matter in bulk. हमने मैटर को बल्क में लिया है. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो 100 ml हमने लिया वाटर, so it is a matter in bulk because this 100 ml contains many atoms. It contains large number of atoms or it contains large number of molecules, large number of chemical species. So it is a matter in bulk. So thermodynamics has significance for this. So thermodynamics deals with the matter in bulk. It does not deal with the properties of individual atoms or molecules, but deals with the properties of the matter in bulk. So such properties of the system, I say properties of the system, of the macroscopic system. When we take the matter in bulk, then there is a macroscopic system. So the properties of the system like temperature, pressure, volume, density, melting point, boiling point, etc. All these properties are known as macroscopic properties. इनको हम बोलते हैं macroscopic properties. So macroscopic properties are actually, these are the properties of the macroscopic system. So a macroscopic system is a temperature, it is a pressure, it is a volume, it is a density, it is a melting point or it is a boiling point, etc. So all these properties are called macroscopic properties. So in short, we can say that a system which contains large number of chemical species like atoms, molecules or ions, that is said to be macroscopic system. And the properties of macroscopic system like temperature, pressure, volume, density,
melting point, boiling point, etc., are known as macroscopic properties. That means the properties associated with the macroscopic system are known as macroscopic properties. Now these macroscopic properties have two types, are divided into two types. इनकी दो किस्म है इन macroscopic properties की. Number one is known as extensive properties. Extensive properties. So extensive properties. Extensive properties are those macroscopic properties of the system which depend upon the quantity of the matter, contained in the system. Meaning quantity of matter. And if you will change the quantity of matter in the system, यानी आप quantity of matter change करोगे system में, the property का value जो होगा, the value of the property will change. So extensive properties are those macroscopic properties which depend upon the quantity of the matter contained in the system. That means if we will change the quantity of the matter in the system, the value of the properties will change. So we have an example of extensive properties, that is mass, we have volume, we have heat capacity, we have internal energy. यानी इनको हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, heat capacity, internal energy, enthalpy, ये हम सब पढ़ेंगे आगे, ये properties. So these are extensive properties. ये extensive properties है. अब अगर हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, इन्हें we divide the system. हमारे पास एक सिस्टम है A, इसको हम डिवाइड करते हैं 1, 2, 3 पार्ट्स में, इसको हम डिवाइड करते हैं. इस सिस्टम A की जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, इसकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी सिस्टम A की, that will be equal to the extensive property of 1 plus extensive property of 2 and plus extensive property of 3. यानी इनका सम होगा, जो इनकी extensive property का सम होगा, that will be equal to the extensive property of A. That means total value of extensive property of the system is equal to the sum of the value of all the parts in which the system is divided. इन सिस्टम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उन सबों की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जमा करके बराबर होती है टोटल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. सो दिस वाज अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नंबर सेकंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज are also macroscopic properties of the system, but they does not depend on the amount of the substance present in the system, but depends only on the nature of the substance. So we can put this in short form. That means the properties which depend on the nature of the substance and not on the amount of the substance present in the system, that is said to be intensive properties. They are said to be intensive properties. उनको हम बोलते हैं intensive property. So intensive property of the substance होती है बराबर, intensive property of the system बराबर होती है, that does not depend upon the amount of the substance present in the system. And if you change the amount of the substance, इसका value change नहीं होगा. So it only depends upon the nature of the substance. For example, temperature है, हमारे पास temperature है, pressure, we have refractive index, we have viscosity. These properties depend on the nature of the substance, not upon the amount of the substance present in the system. A matter contained by the system, surface tension. So for example, if I take water, अगर मैं water ले लूँगा एक system, I have taken 1 kg of water, for example, 1 kg of water. इसका temperature है 50 degrees Celsius. अगर मैं इसको half कर दूँगा, I will take half kg of water. इसको मैं 2 sample बनाऊँगा.
सो इसका मतलब जो इंटेंसिव होगा इसका वैल्यू चेंज होगा, दैट मींस टेंपरेचर विल बी सेम, यानी आधे केजी का भी टेंपरेचर सेम होगा और उसका भी, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये नेचर पे डिपेंड करता है। सो टेंपरेचर ऑफ द टू सैंपल्स विल बी सेम, हाफ एंड हाफ, हाफ केजी का भी टेंपरेचर सेम, हाफ जो मैंने उसको दो हिस्से कर दिए ना, दो हिस्से कर दिए हाफ एंड हाफ, उनका टेंपरेचर सेम रहेगा, दैट मींस दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड नहीं करती है ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट ऑफ द सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस of the system, of the nature of the substance present in the system. So extensive property became intensive property. Extensive property बनती है intensive property. यानी extensive property कभी बन सकते हैं intensive property. कब? When we specify the unit, when we specify the amount of the substance. That means extensive property become intensive property by specifying unit amount of the substance concerned. यानी जब आप किसी सब्सटेंस का उसका आप लेते हो यूनिट अमाउंट लेते हो आप उसका, सो उस वक्त उसकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है दैट बिकम्स इंटेंसिव, वो बनते हैं इंटेंसिव। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय स्पेसिफाइंग यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मास अगर हम लेंगे, इफ आई टेक मास एंड वॉल्यूम, these are extensive properties, ये extensive properties है। if I take density is mass per unit volume, मैंने specify कर दिया unit volume, मैंने यहाँ पर specify कर दिया, so density is intensive property, ये intensive property है। इसी तरह specific volume अगर मैं ले लूंगा, specific volume का मतलब है volume per unit mass, सो यहां पर मैंने यूनिट मास कर दिया, वॉल्यूम पर यूनिट मास स्पेसिफाई कर दिया मैंने, यहां पर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कर दिया मैंने स्पेसिफाई। सो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज एक्चुअली इट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास, so this is specific volume. So mass and volume are extensive properties. जब मैं स्पेसिफाई करता हूँ फिर अमाउंट, स्पेसिफिक यूनिट अमाउंट में लेता हूँ तो वो बनती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बनती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो डेंसिटी बनती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बनेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं लूंगा स्पेसिफिक हीट में मैं करता हूँ स्पेसिफाई अमाउंट, यूनिट वॉल्यूम में यूनिट अमाउंट में करता हूं स्पेसिफाई यूनिट अमाउंट, यहां पर मैं स्पेसिफाई करता हूं अमाउंट, सो इस वक्त ये स्पेसिफिक हीट फिर बनेगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन सकती है कब? व्हेन वी स्पेसिफाई यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंसर्न। सो अब अगर दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, अगर हमें दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, फॉर एग्जांपल वी हैव मोल्स of component, moles of component ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इनका रेशियो जो होगा, इनका रेशियो दैट विल बिकम मोल फ्रैक्शन, हो गया मोल फ्रैक्शन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव थी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। So in moles of component extensive property, total number of moles of component is extensive property, ये इनका रेशियो होता है मोल फ्रैक्शन के बराबर, so mole fraction is intensive property. So in short we can say that ratio of the extensive properties becomes ratio of the extensive properties, the two extensive properties becomes intensive property. So this was about macroscopic system, macroscopic properties. Then we have two types of macroscopic properties. We have extensive properties and intensive properties.